ठीक है, तो उसके बाद क्या लिखा हुआ है, प्रोवाइड 4 की डायमेंशन ऑफ ई कॉमर्स, मैसेज इंटीग्रिटी, नॉन रिपुडिएशन, ऑथेंटिकेशन एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, है ना। तो ये सारे डायमेंशन, एक सिक्योरिटी, एक कंटेक्स्ट में कॉन्फिडेंशियलिटी वगैरह, ये ऑथेंटिकेशन, कॉन्फिडेंशियलिटी, ये सारे काफी इंपॉर्टेंट है ई कॉमर्स, ठीक है ना। आप जो परचेज करो, आप नहीं चाहोगे कि किसी और को वो चीज लीक हो जाए। सो कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑथेंटिकेशन, ये सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ठीक है। सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन, ठीक है। सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन और पब्लिक की जो है, इसको हम डिटेल में समझेंगे। पहला तो ये हम देख लें कि सिमेट्रिक की में एक ही की रहता है, सेम की रहता है, और पब्लिक की में जो है 2 की रहता है, ठीक है। तो इनको एक एनिमेटेड वीडियो के थ्रू हम समझेंगे। सिमेट्रिक इंक्रिप्शन को आई थिंक ऑडियो शेयर करना पड़ेगा। Certain people can look at your message. There are two types of encryption, symmetric and asymmetric encryption. Let's first take a look at symmetric encryption to understand why asymmetric encryption was created. To do that, let me introduce you to Alice and Bob. Alice has a sensitive document that she wants to share with Bob. She uses an encryption program to protect her document with a password or passphrase that she chooses. She then sends the encrypted document to Bob. However, Bob cannot open this message because he doesn't know the passphrase that Alice used to encrypt the document. In other words, he doesn't have the key to open the lock. Now comes the real problem. How does Alice share this passphrase securely with Bob? Sending it through email is risky because others might find the passphrase and use it to decrypt any messages between Alice and Bob. This is exactly the kind of problem that asymmetric encryption intends to solve. It is comparable to a mailbox on the street. The mailbox is exposed to anyone who knows its location. We can say that the location of the mailbox is completely public. Anyone who knows the address can go to the mailbox and drop in a letter. However, only the owner of the mailbox has a key to open it up and read the messages. So let's now go back to technical details. When using asymmetric encryption, both Alice and Bob have to generate a key pair on their computers. A popular and secure way for doing this is by using the RSA algorithm. This algorithm will generate a public and private key that are mathematically linked to each other. Public keys can be used to encrypt data, and only the matching private key can be used to decrypt it. Even though the keys are linked together, they cannot be derived from each other. In other words, if you know someone's public key, you cannot derive his private key. If we retake our mailbox example, then the mailbox's address would be the public key, something that everyone is allowed to know. The owner of the mailbox is the only one who has the private key, and that is needed to open up the mailbox. Let's now take a look at how Alice and Bob can use asymmetric encryption to communicate securely with each other. They start by exchanging their public keys. Bob gives his public key to Alice, and Alice gives her public key to Bob. Now Alice can send her sensitive document again. She takes the document and encrypts it with Bob's public key. She then sends the file to Bob, who uses his private key to unlock the document and read it. Because they use asymmetric encryption, only Bob is able to decrypt the message. Not even Alice can decrypt it because she doesn't have Bob's private key. The strength and security of the asymmetric encryption now relies on Alice and Bob to keep their private keys well protected.
If an attacker steals Alice's private key, it can be used to decrypt all messages that are intended for Alice. However, the attacker cannot decrypt messages that were sent by Alice because that requires Bob's private key. Asymmetric encryption is used in a lot of places where security really matters. You might not be aware of it, but every time you visit a secure website via HTTPS, you're actually using asymmetric encryption. It's also being used to securely send emails with the PGP protocol. And one last example, Bitcoin also uses asymmetric encryption to make sure that only the owner of a money wallet can withdraw or transfer money from it. So now you know how asymmetric encryption works and what the differences are between asymmetric and symmetric encryption. If you like this video, consider supporting me by sharing. सिमेट्रिक वाले में जो है सेम की रहता है, लेकिन एसिमेट्रिक में जो है सब की रहता है. So, in this week's video, we'll understand public key cryptography, what it is and how it works. Let's get started. Let us first understand what cryptography is. In its most real sense, cryptography deals with encrypting and decrypting digital assets using what we call keys, which are actually huge sequences of characters. Operations are performed wherein the data interacts with the keys to create a secure representation of the data, on which the reverse process yields back the data again. That's a little too technical. Let's simplify that. In its most basic sense, here's what it is. Consider that you have a file with you. Encrypting that file is as good as putting it in a box and then putting a lock on top of it, wherein particular keys are used to lock or unlock that box. That's it. With that understanding in place, let's see how different types of encryptions work. First up is symmetric cryptography. This is the easiest to understand. Let us say Andy has a file which he wants to encrypt and then send to his friend Bob. This is how it can be achieved through symmetric cryptography. Andy puts his document in a box, puts a lock on top of it, and then locks it using a key. Bear in mind that Andy needs to share his key with Bob beforehand in order for this to work. When Bob gets the box, he can just open the lock and see the file sent. As no one else has Andy's key except for Bob, his files are protected from everyone else. As Andy and Bob are friends, it is fine for Andy to share his key. But then, what happens in scenarios when Andy is not in a position to share his own key with the recipient of the document? This is where public key cryptography comes in handy. So, what is public key cryptography? In symmetric cryptography, we learned that Andy needed to share his key with everyone if he intended to share his documents with them. Here is an alternative. Andy generates two types of keys. The first one of them is a private key. As the name suggests, this key is only present with Andy and no one else has access to it. The second key that Andy generates is the public key. This one he can share with everyone. So, he can make multiple copies of it and literally share it with the entire world. But wait, how is sharing one's public key in any way better than sharing one's key as we did in symmetric cryptography? Let us understand that. The fact that Andy can share his public key with anyone and make encryption work has to do with the way in which public key cryptography encrypts and decrypts the data. Again, it is a complex process that involves a lot of operations between the private and public keys, but let us understand it with an easy analogy. Simply speaking, public key cryptography works like a special kind of lock as shown here. This lock has three states that it can be in. Out of them, two states are locked and one state is unlocked. And here's the interesting part. A private key can only turn this lock in clockwise direction, and a public key can only turn this lock in an anti-clockwise direction. Yes, that is one weird lock. But let's see how it aids us in accomplishing public key cryptography. Here's the lock that we just talked about. Let's say this time Bob wants to send some information to Andy. He follows the usual procedure, takes the file, puts them in a box. Now he puts this weird lock on the box and locks it using Andy's public key that Andy distributed to the whole world like hotcakes.
As you can remember, a public key can only turn the lock in anti-clockwise direction. Thus, the lock moves from the U state to the L1 state. This is the encryption part. The file is then sent to Andy and he pulls out his all-powerful private key. Now, this is the only key in the world that can turn the lock in clockwise direction, that is from L1 to U. And hence, Andy is the only person in the world who can open this lock. Unless he उससे हुआ था encrypt, अब इससे clockwise क्या हो रहा is है? dumb enough to share his private key with his best friends. Well, there we have a happy ending. Bob has successfully encrypted and shared a file with Andy that only Andy can decrypt. If Andy wanted to share something with Bob, he would repeat the process, but this time encrypt the files using Bob's public key. Sounds great. But wait, there is more to this weird lock's capabilities. Let's explore that as well. So we have the same lock as before. This time, Andy wants to send a file to Bob and he locks the box with his own private key, which he can perfectly do. This makes the lock move from state U to state L2. But what is Andy trying to achieve here? Anyways, he sends the file to Bob and then asks him to open the box using Andy's public key that he already has. Bob tries this and he is able to open the lock, that is, turn the lock from position L2 to position U. That's where Bob gets the point. If there was any key in the world that could move the lock from U to L2, it was Andy's private key. Thus, Bob can now be 100% sure that whatever is in the box was put in there by Andy and that nothing has been tampered with. In digital language, this is called signing and verifying. What we saw just now was Andy signing a document with his private key and anyone else receiving the document verifying it was from Andy by unlocking it with his public key. The weird lock is indeed useful, isn't it? That was some basic information that you need. ठीक है, तो हमने इसका डिफरेंस ठीक है, तो हमने सिमेट्रिक अनसिमेट्रिक की में अंतर समझा। तो सिमेट्रिक में क्या है कि सेम डिजिटल की यूज होगा इंक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के, है ना। जो की जो है आपके मैसेज को इंक्रिप्ट कर रहा है वही की से वो डिक्रिप्ट भी हो जाए। तो मतलब किसी के पास आप सिमेट्रिक की का इंक्रिप्शन का यूज कर रहे हो और आपका डिजिटल की अगर लीक हो गया है तो वो सेंडर का जो है मैसेज भी कर सकता है, रिसीवर से भी मैसेज जो है वो डिक्रिप्ट कर सकता है। सो एक ही की से वो इंक्रिप्ट हो रहा है और उसी की से, है ना, वो हो रहा है। जैसे एक ताला काम करता है, सेमी से वो बंद होता है, सेमी चाबी से खुलता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आगे कि रिक्वायर्स डिफरेंट सेट ऑफ कीज फॉर ईच ट्रांजेक्शन, है ना। तो जितना भी ट्रांजेक्शन करोगे तो आप चाहोगे हर ट्रांजेक्शन का तो अलग ही की होना चाहिए ना, वरना पता चला किसी एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन का की मिल गया तो उससे सारा ही ट्रांजेक्शन आपका लीक हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ इंक्रिप्शन, लेंथ ऑफ बाइनरी की, है ना। जितना लंबा बाइनरी की है ना आपका, हर एक अल्फाबेट के लिए मान लो 26, 50, 0110 कॉम्बिनेशन है, जितना लंबा बाइनरी आप यूज कर रहे हो उतना ज्यादा वो सेफ एंड सिक्योर होगा। पब्लिक इंक्रिप्शन क्या है, यहाँ पे हमने क्या बोला कि यहाँ पे दो की होंगे, एक तो पब्लिक की और दूसरा प्राइवेट की। पब्लिक की का काम ही है इसको सेफ गार्ड करना, है ना, क्योंकि आपको मैसेज के साथ कोई बंदा इंफॉर्मेशन दे रहा है तो वो उसको उसी चीज के साथ क्या कहते हैं की भी नहीं दे सकता है, क्योंकि की अगर किसी को मिल गया तो जो मैसेज आपको पढ़ना था वो कोई और भी पढ़ सकता है अगर की उसके पास हो। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए प्राइवेट की रहता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बोथ कीज आर यूज्ड टू एनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट मैसेज। वंस की यूज्ड टू एनक्रिप्ट मैसेज, सेम की कैन नॉट बी यूज्ड टू डिक्रिप्ट मैसेज। सेंडर यूजेस रेसिपिएंट पब्लिक की टू एनक्रिप्ट मैसेज एंड रेसिपिएंट यूजेस हिज प्राइवेट की टू डिक्रिप्ट इट, है ना। तो जो मैसेज, मान लिया आप किसी को मैसेज भेज रहे हो एंड टू एंड एनक्रिप्शन में, तो जो आप जिसको भेज रहे हो उसका पब्लिक की से वो इनक्रिप्ट होगा। ठीक है, आप जो भी मैसेज जिसको भेज रहे हो तो आपका जो रिसीवर है मैसेज का उसके पब्लिक की से वो मैसेज इनक्रिप्ट होगा
और जब रिसिपिएंट यानी कि जिसको आपने मैसेज भेजा उसके पास आएगा तो वो अपना प्राइवेट की जो कि सिर्फ उसके डिवाइस में है, ठीक है, जो उसको एलोकेट हुआ है उसके थ्रू ही वो डिक्रिप्ट कर सकता है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन देखते हैं एंड देन वी विल कंक्लूड द सेशन। कोई बंदा शेयर खरीद रहा है ना, सिस्को का शेयर कोई बोला $25 में खरीद, तो उसका जो है ना सेंडर से रिसीवर तक है ना, जिस सिस्टम को ये इंफॉर्मेशन जिसके पास मिलनी चाहिए कि इस पार्टिकुलर इंसान को सिस्को के इतने शेयर खरीदने हैं ना, तो मैं उसको एलोकेट कर दूं। ओरिजिनल मैसेज जब निकलेगा तो पब्लिक रिसिपिएंट पब्लिक की इस वाले सिस्टम है ना, जो भी स्टॉक ब्रोकर का जो भी की होगा वो की से यहाँ पे इनक्रिप्ट होगा मैसेज, ठीक है। उसके बाद वो इंटरनेट पे जाएगा, फिर इंटरनेट से जब वो सिस्टम के पास आएगा तो इस जो ब्रोकर का दो की है ना, पब्लिक की प्राइवेट की, ब्रोकर के पब्लिक की से ये इनक्रिप्ट हुआ है, और डिक्रिप्ट यानी कि डिसाइफर कब होगा, जब वो इस मैसेज को पढ़ना चाहेगा उसके प्राइवेट की से होगा, ठीक है। सो वी सॉ दिस अप अंटिल दिस इन दिस लेक्चर, ठीक है। अब ये हैश, ठीक है, हैश वगैरह हम कैसे जनरेट करते हैं, हैश का क्या यूसेज है, क्या रोल है ना। बिटकॉइन वगैरह जैसे आप लोगों को पता हो आजकल काफी हाइक हो रही है उस पर, तो बिटकॉइन का जो भी ट्रांजेक्शन होता है ना, एक पर्सन टू दूसरा पर्सन, वो पूरा सिर्फ रजिस्ट्री या रिकॉर्ड पे ही बेस्ड है ना। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करता है बिटकॉइन या कोई भी और क्रिप्टो करेंसी। तो वो एक ट्रांजेक्शन जो आपने किसी और को पैसा भेजने के लिए, तो ये सिर्फ वो एक रजिस्ट्री है, ठीक है ना, जो मेंटेन कर रहा है कि इन्होंने इतना बिटकॉइन दिया, बस इतना ही रिकॉर्ड काफी है पैसे का लेन देन कंप्लीट करने के लिए। एक्चुअल में किसके अकाउंट से कितना गया, ठीक है, उसका क्या कहते हैं उसका एक कोई बहुत डिटेल्ड लेजर नहीं बनेगा। सिर्फ एक लाइन में ये ट्रांजेक्शन हुआ कि इनके अकाउंट से 2 बिटकॉइन कट के फलाने अकाउंट में गए, तो एक एड्रेस बन जाएगा ट्रांजेक्शन का, और वो एड्रेस ही सफिशिएंट है वेरीफाई करने के लिए आपके अकाउंट से पैसा बिटकॉइन काटने के लिए भी, और दूसरे रिसिपिएंट के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने के लिए भी। सिर्फ वही सिग्नेचर है ना, और वो सिग्नेचर जो है वो हैश में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब जो आपका नाम है, एड्रेस है, बिटकॉइन वैलेट का एड्रेस है, वो सारी चीजें @ हैश फलाना जो भी है वो हैश में कन्वर्ट हो जाता है। तो हैश वगैरह ये सारी चीजें क्या होती है, ठीक है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो टेकिंग द अटेंडेंस, डोंट डिस्कनेक्ट। ऑलराइट, तो विल मीट इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम हैश और डिसाइड